प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। रात तुम कोर क्वेश्चन नंबर 6 तम मकलो एक्सरसाइज आज मकलाव बेस 4 क्वेश्चन रोज क्वेश्चन नंबर 7 करो आज। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। वन मेज कित कन बना लिखो आंसर। Soil has been formed from parent rock material over millions of years ago. The process by which soil formation takes place is called weathering. Weathering rocks फटा न्यूक बना तम पे बना soil. Weathering is a very slow and gradual process. Weathering is a very slow and gradual process. Various lot process, various slow process. The during which यह दौरान गसच कम parent rock material breaks down into यह दौरान parent rock material break down into fine particles. Lakit particles, निक particles बनाए वारिया प्यूत गसा तो अमन वना यह गई soil पच वना weathering process गसा soil formation. गोया कि question is soil has been formed from parent rock material over millions of years ago. The process by which soil formation takes place is called weathering. Weathering is a very slow and gradual process during which parent rock material breaks down into fine particles. तवे बना पता इथे कन soil. You go question number 7. Im pat देखो is question number 8. Question number 8 show how is clay soil useful for crops? Question number 8 वन clay soil कित कन useful फसलन खतर. Clay soils are very useful for crops because these soils number contain humus providing fertility to soil. Providing fertility to the soil. यम कर soil's fertility provide यानी कि humus numbers वुचान clay soil holds sufficient water due to the presence of
smaller particles क्योंकि clay soils यूजन छ आत्म मज लकट लकट particles तवे water holding capacity वारिया ज्यादा त्रीम अगर अस वुचो contains enough air due to the presence of at much वारिया ज्यादा air due to the presence of some large particles also at large particles smaller particles im air te वारिया ज्यादा गोया कि अस पोर कि clay soils are very useful for crops because these soils तिकज यमन मिज मज contain humus अत मज ज्यादा यूज fertility provide करन मिज इथे कन water holding capacity असल तवे तम बे बड़ particles तम सत air te हेकान पकित गो ये question number 8 question number 9 im pat as beak question question number 9 yes अच्छा list the differences between clay soil and sandy soil तो clay soils दरमियान क्या difference अस लिखो योर clay soil योर लिखो sandy soil यानी कि clay soil तो sandy soils दरमियान क्या फर्क गोडन्युक अगर इस difference लिखो proportion of fine particles is more than big particles. Big particle खत बड़े particle खत अत मज ज्यादा तादाद fine particle लकट लकट यथ मज वो number 1 proportion of big particles ज्यादा proportion of big particles is more than fine particles लकट particle खत अत मज बड़ी particles ज्यादा यूजन अच्छा numbers are difference it has less percolation capacity less percolation percolation rate of water agar is yath wucho more it has more percolation rate of water yath zyada percolation gasan itha kana wucho treyim good it has good water holding capacity water holding capacity asal yath it has poor water holding capacity you can have three difference यानी कि three difference पार आथे तो कर ये गो असे clay soil sandy soil दरमियान difference last question च असे याथ मज करन सु च असे question number 12 question number 10 11 हम छन करन जरूरत question 12 च असे last question यूजन अस छु तो ये च अस करन explain how soil pollution and soil erosion could be prevented कित कना हेको soil erosion तो soil pollution यूजन च ये कित कना हेको prevent कर आथ लेखो answer prevention of soil pollution कित कना हेको रुक यानी कि soil pollute गसन गंद गसन आथ खतर क्या number 1 point atmas ban on polythene bags polythene usan lifaf ch asan polythene bags iman ped gasi ban karna to be and plastic ped ban go ye ch ak point number 2 point waste products the chemicals
treat करना यानी कि treatment of waste products and chemicals before releasing broad treatment कर. Number 3, use of pesticides should be minimized. यानी कि पेस्टिसाइडन हुंद यूज गछ मिनिमाइज कर. ब्याक पोर यूजन ओत्रे पोर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन कित कना हेको रुकइत प्रिवेंट कित कना अत खतर छ अस करन काम नंबर 1 पॉइंट देखो अस अत मज बाय ग्रोइंग ट्रीज अस गछो ज्यादा खत ज्यादा कुल लागन यानी कि एफॉरेस्टेशन कर न कि डिफॉरेस्टेशन. नंबर 2 पॉइंट अवॉइड डिफॉरेस्टेशन यूजन यह गो अवॉइड कर यानी कि कर कुल षटन कोशिश करें कह. 3 शिफ्टिंग ऑफ कल्टिवेशन यानी कि ज़रात यह वपदावान मेज मज यह कुल तो कुस फसल अक वरी गई फसल बेक वरी गई ब्याक या अगर वरिस मज 2 फसल या 3 फसल गन शिफ्ट इन कर अकुई फसल गन यून वपदान कहें. इत कर हेको सॉइल एरोजन रुकइत. गो अथ सती मकलिया यह सॉइल चैप्टर यह गो अथ एंड. थैंक यू.